पाकिस्तान, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाने वाली हूँ बड़ी ज़बरदस्त खातून, तो मैं नहीं कहूँगी, बड़ी ज़बरदस्त लड़की से। मैं एक्चुअली जो उनका काम है, टू बी ऑनेस्ट इट्स टोटली न्यू टू मी, और अभी मेरी उनसे ब्रेक में थोड़ी बहुत डिस्कशन हो रही थी एंड आई वाज जस्ट गेटिंग सो अमेज्ड कि इस तरह का काम भी है पाकिस्तान में, ना सिर्फ ओवरऑल भी ग्लोबली इफ़ यू टॉक अबाउट। तो मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी और खुशी भी हो रही थी कि शी इज़ द वन हु स्टार्ट ऑफ दैट वर्क। अब वो काम क्या है, आई एम गोइंग टू मेंशन राइट नाउ। बेसिकली दैट इज़ डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग। आपने हमेशा फिजिकल फैशन डिज़ाइनिंग का सुना है, कैंपेन्स होती हैं, फिर उसके अलावा फैशन शोज़ होते हैं, सारी चीज़ें जहाँ पे अपेरेंटली आप देख रहे होते हैं। डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग तो पहली बार सुना है, किस तरह से होता है, एंड एक्चुअली इट्स एन इंडस्ट्री विच इज़ ऑल्सो न्यू आई गेस टू ऑल ऑफ यू गाइज एज वेल। तो हम इसके हवाले से बात करेंगे। ऑल्सो शी इज़ अ डिजिटल फैशन डिज़ाइनर और उसके साथ साथ शी इज़ द फाउंडर ऑफ कर्ल्ड अलारा। तो दोनों चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। और बेसिकली हमारे साथ मौजूद हैं जोहा खान, जो कि अभी जैसे मैं बताई थी कि डिजिटल फैशन डिज़ाइनर हैं, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टू नो दैट एज वेल। सबसे पहले उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जोहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। That's great. I'm happy to have you here. क्योंकि अभी जिस तरह से आपसे कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो मैं हैरान हो रही थी कि अच्छा ऐसा भी कुछ है जो कि हो रहा है। और जब मुझे इनकी चीज़ों का पता चल रहा था कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या काम किया और किस तरह से यू गॉट द रिकग्निशन, माशाल्लाह, आई वाज गेटिंग अमेज्ड ऑन दैट एज वेल। उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोगों को बताने के लिए कि वो एक्चुअली इज़ द डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग। ओके, बेसिकली हम यूजुअली बात करते हैं अबाउट फिजिकल फैशन कि हम गए, हमने किसी ब्रांड से कपड़े खरीद लें, देन वी वेयर इट। बट देन अब थिंग्स आर बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। नाउ वी गेटिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ वेब 3, राइट? तो उसके अंदर अब वेब 3 में जो भी आपके एवेटार्स हैं, दे वुड नीड क्लोथिंग। आपकी वर्चुअल Web3 is basically, it consists of multiple things, right? इसके अंदर metaverse आ जाता है where you can do virtual meetings, you can do concerts, and it's just like a virtual gathering, right? That's metaverse. Then comes कि आपने virtually अपने किसी avatar को आपने कपड़े पहनाने, gaming is also now part of the Web3 space, right? तो basically what we do is कि अच्छा if you need कि आपको लाइक इन्फ्लुएंसर्स, राइट? इन्फ्लुएंसर्स ने एक दफ़ा कपड़े पहनने होते हैं और फिर वो वापस कर देने होते हैं, राइट? सो दैट्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज। तो इवन इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, तो what we do is we provide you virtual clothing, right? वो कहीं पे भी नहीं जा रही, you don't even have to get out of your house, you just have to give us a picture or something of you, और फिर हम what we do is we edit the garment on top of you and then you can post it, so you can get all that reach by a garment that does not even exist in real life. Oh right, so it's just like, जैसे हम अब चूँकि आपको एग्जांपल इन्फ्लुएंसर की दे रही हूँ और मैं थोड़ा सा इसको मजीद समझना चाह रही हूँ खुद भी, और ताकि लोगों को भी इस चीज़ की समझ आए। कपड़ों की हम किसकी बात करें? जैसे अगर एक इन्फ्लुएंसर है, हम उनकी बात करें या जो हम उस इंडस्ट्री की बात करें जो कि कपड़े दे रहे हैं? हम इन दोनों लोगों की बात करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो इन्फ्लुएंसर है उसने भी उसी इंडस्ट्री से कपड़े लेने हैं, राइट? तो वी आर टॉकिंग अबाउट, ये तो मैंने आपको एक यूज़ केस दिया है इसका, देयर मल्टीपल यूज़ केसेस। अब हमने अगर वर्चुअली फिल्टर में यूज़ करना है, वी कैन पुट इट ऑन अ फिल्टर, मतलब जैसे जस्ट इन केस इट्स मी ना, एंड आई एम वर्किंग विद सम ब्रांड और समथिंग, तो मुझे अभी क्या, मुझे फिर वो कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्रांड को किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने कपड़े इस्तेमाल करा सकते हैं ऐसे ही किसी भी मॉडल पे। अब जैसे आप हैं, वी कैन प्रोवाइड यू विद आवर फिल्टर, वी कैन प्रोवाइड यू विद a virtual identity, right? कि हम कहें कि आपकी ये identity है, this is the clothes that you wear, right? हम आपकी digital, in real it's not there. It's not there, but virtually it's there. It's just the same as that I've heard about some kind of Instagram accounts, जो कि there are few of the girls or somebody के जो जिनकी अपनी कोई appearance नहीं है, not even they don't exist. AI. Yeah, they don't exist. So वो आ जाता है in virtual models. Right. What we do is we make virtual clothes for people. Oh right. तो अब उस मॉडल ने भी कोई कपड़े तो पहनने हैं, right? हाँ, तो so they'll go to people like us who will make the clothes for them. So this also, you know, trickles down to the gaming industry, क्योंकि आपके avatars हैं, आपने customization करनी है. Places like Roblox, Ready Player Me, they need clothes, क्योंकि जितनी हमारी Gen Z है and like younger generation from that too, वो hang out कहाँ करते हैं? At Roblox, which is a game. So they don't talk on WhatsApp, they talk during the game, they catch up during the game. हाँ, that's so interesting. वही ना, नए दौर के नए मसाइल और नए मसाइल के नए दौर के हिसाब से हल भी है, तो वही बात है ना। I feel like you belong to, you are actually Gen Z also, right?
This is borderline. when you can borderline. I'm also borderline basically, but I totally feel you are a Gen Z. मैं इसलिए कह रही हूँ because you are just doing all of the stuff that actually Gen Z need. या उन सब की जिस तरह से अब गेमिंग का ही दौर है, आप देखेंगे बच्चे बहुत कम फिजिकल एक्टिविटीज़ पे होती हैं, तो फ़ोन पे होती हैं, लैपटॉप्स पे होती हैं, एंड यू प्रोवाइड क्लोथिंग फॉर दोज चिल्ड्रन. कितनी मज़े की बात है ना, डिजिटली यू जस्ट कोपिंग अप एंड सीइंग कि कौन सी चीज़ें जो रिक्वायर्ड एंड यू जस्ट वर्किंग फॉर दैट. अच्छा, ये तो हमने बात कर ली, बता दी कि डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग बेसिकली होती क्या एक्चुअली यू डू. अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हाउ यू बीन देयर when you started off and you are a pioneer in it ना, क्योंकि ये अभी जिस तरह से आपने बताया कि 2022 में it started off, one of the pioneers ना पाकिस्तान में. तो अब आपकी जर्नी के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि how you do it and what actually you have done so far, because I've heard कि आपने बहुत लंबा चौड़ा बड़े अच्छे लेवल पे काम भी किया हुआ है. So I really want to know about that. So it started off basically, I graduated from PIFT, Pakistan Institute of Fashion and Design in 2020. So at that point, I did not really know what's going to happen. So my thesis was around. Also, there was a COVID at the time, na? COVID at that time, everything was very uncertain. Then I was like, I do need to get a job after graduation. So I applied. I already had an offer from Lulu sir, and I really wanted to go there. My pura thesis was around them too. I was that obsessed. Yeah. And then I got that job. I was like, that is amazing. That's but what I did not. Yeah, but I did not realize that the post is digital fashion for a digital designer. And I did not even know what that was. But it just sounded very cool, very interesting, and I was like, okay, I'm up for the challenge. You thought, let's dig into it then. Yeah, let's see, what is it? It was a happy accident, that's what I said. It has been a life-changing accident for you also. Yeah. I worked there for 1.5 years. Actually, Pakistan ki jo pehli digital collection hai, wo Lulu sir ne banayi thi, and I was heading that. Oh, wow, that's great. That was a very, very important moment for me, because that was the point when I realized that there's a lot of things that I can do myself. I can do print design, I can do the marketing, I can provide you with graphics, I can give you a whole marketing campaign digitally. So you don't need physical models, aapko cameraman nahi chahiye, aapko lighting nahi chahiye. There's not a lot of expense involved, you can do it all digitally. So that was a very interesting point in my life, and I thought, Acha, now is the time that I need to take this on an individual level, कि मैं खुद चीज़ें करूँ and I grow. And that's when I stepped into the global digital fashion industry. And ittifaq se Digital Fashion Week, which is a very, very big event now, उनके पहले events हो रहे थे. They also just started off, because as I said, this is the new industry. Digital Fashion Week कब हुआ था? We actually are seeing your visuals as well on the screen, and I'm just so amazed कि बिल्कुल ऐसी लग रहा है कि हाँ, digitally there's a place and it's happening. Yeah. That is so cool. Such a cool job. You can see dresses are being showcased over there. Yes. And you have designed all of these dresses digitally. I have. This was actually one of my solo works. This was for Digital Fashion Week. Wow. And this is the film that's very close to my heart. This was also nominated for Best Web3 Fashion Film for Fashion Film Festival Milano. And that's a huge fashion festival basically. Na? Everybody talks about it, like huge people over there. That's a huge achievement. Thank you so much. I'm amazed. That's great. Yeah, talking about this film, so the whole concept is the title of the film is identity. So मैं जब भी कोई काम बनाती हूँ, my inspiration is basically human emotions. कि what एक तो वो side है of the emotion कि अच्छा the viewer is seeing the work, तो उसको क्या महसूस हो रहा है. फिर एक ये है कि मैं क्या चाहती हूँ कि viewer को महसूस हो, right? क्योंकि it is sort of art कि अगला उसको कैसे interpret कर रहा है. So for this film, I was talking about the identity crisis faced by South Asian immigrants. कि आप shift हो जाते हैं बाहर, but then you don't look like. You're not even Pakistani, you're not even any immigrant. ना बीच में कहीं लटक जाते हैं. उनसे बात करेंगे कि you too Pakistani for us, or you too any other country belong to. I can feel that. So it's just a very weird situation to be in. So this was my target audience. This is the message I want to convey. कि किस तरह एक लड़की है which is personified by clothes. कि पहले उसने एक मुगल miniature print के उसने blazer और tights पहनी है. It is a very western silhouette. लेकिन उसके ऊपर एक बहुत ही मुगल intricate काम हुआ हुआ है, right? और वो बहुत dark place से जाती है towards finally being a Mughal princess. कि उसका एक वो उस point तक वो evolve होती है कि okay, now I'm embracing who I am and who I want to be. So it's a very beautiful journey of embracing yourself and owning who you are.
That's great. That's great. I'm just honestly so amazed. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है because as I said earlier, it's also new to me and I haven't known कि this can go this far. So you're doing great. हम बात कर रहे हैं डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से और अब ये भी नहीं पता था कि डिजिटल फैशन वीक्स भी होते हैं. So उसके हवाले से आपको बता रहे हैं और हम खुद भी जान रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान के जो खूबसूरत और मुख्तलिफ इलाके हैं आपको वो दिखाते रहें और इसके साथ साथ पाकिस्तान में कहाँ पे किस इलाके में क्या हो रहा हो तो भी साथ साथ बताते रहे. तो गिलगित बल्तिस्तान की एक वैली है जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह से बनती हैं, उनका बनाने का तरीका कार जो है, आइए चलिए आपको दिखाते हैं. जी नाज़रीन, गप्पा वैली बेसिकली नगर के गांव छल्त का जो है लोगों का चरागाह है और यहाँ इस मौसम में जो है लोग और चरवाहे जो है यहाँ आते हैं, अपने लिए छोटे छोटे घर बना के अपने माल मवेशियों के साथ यहाँ बैठते हैं और पूरे समर्स जो है वो यहीं पे गुजारते हैं. और यहाँ पे उनकी एक्टिविटी बेसिकली होती है जानवरों से, अपने माल मवेशियों से वो डेयरी प्रोडक्ट्स निकालें और डेयरी प्रोडक्ट्स निकाल के जो है वो सर्दियों के लिए स्टॉक भी करते हैं और आम बाज़ार में वो उसकी ख़रीद फरोख्त भी होती है. तो इस वक्त हम मौजूद हैं एक घर में जहाँ पर हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं और ये डेयरी प्रोडक्ट ही निकाल रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये एक देसी मशीन है जिससे बेसिकली पुराने ज़मानों में जो है लस्सी निकाली जाती थी. तो अब यहाँ पर बिजली का निज़ाम नहीं है, इस वजह से जो है लोग इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं. इसकी ख़ास बात ये है कि इस मशीन से जो लस्सी और जो देसी घी निकलता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है. आइए हम इसका थोड़ा सा आपको प्रोसेस दिखाते हैं. ये थी गब्बा वैली गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं वो आपको दिखाएं. इन दिस सेगमेंट स्पेसिफिकली वो स्पॉन्सर्ड बाय एसईओ स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन. और स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ जो है वो आपको जो स्मार्ट टीवी है उनकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. हमारे साथ एक बड़ी बेहतरीन सी खातून, रादर देन आई शुड से लड़की, ज़ुहा मौजूद है और वो जो है डिजिटल वर्ल्ड पे आप कह सकते हैं कि अभी आजकल आई एम जस्ट गोना से कि छाई हुई है, इसलिए बिकॉज शी इज़ द वन हू इज़ द पायनियर एंड शी इज़ द वन यू वर जस्ट टेलिंग मी अबाउट दिस एज वेल कि पाकिस्तान में आपके अलावा ग्लोबली और कोई काम भी नहीं कर रहा है. Yeah, globally not on this level, हाँ. but certainly मतलब अभी they are emerging artists और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. I'm very happy to see that क्योंकि जब when I started off there were literally just 2-3 or more people that I knew personally on a personal level that I knew कि वो काम कर रहे हैं. अच्छा. But seeing so many young people get into this, it makes me very happy. हाँ, it makes very happy and also I guess makes happy that you're the pioneer, isn't it? I won't say it doesn't. It does definitely because there's something that you started off, or you can say you just along with the other people you just started off at that time. अच्छा, इसके अलावा you're the founder of cult Alara, so I really do want to know what actually it is and what does it mean also. Yeah, so when I was figuring out the name, क्योंकि नाम बहुत ज़रूरी होता है, right? That's right. It shapes your whole company, your whole brand, and क्योंकि मैंने marketing and merchandising पढ़ी हुई है, तो I look at everything as a marketer because की branding should be on point. So I was looking for names and एक नाम आया Alara, Right. which has Turkish origins, also has African origins. Right. So in Africa it means a gem, a red ornament which is supposed Red to be worn. ornament. Yeah. Or in Turkish origin it's like a fairy. A fairy which is, you know, in water and stuff like that. So it's a very, very beautiful meaning in every culture. So I was like, that is something that I really want. It's also easier to pronounce. And cult, I wanted to add that because this is a cult. Everybody who gets into digital fashion, itna absorb ho jate in that space, and it's just so. It's a very good vibe to have, you know, creative people around you who like what you do and, you know, are looking forward to the next 20 years, how it's going to be shaping the whole, even the fashion industry, because we are part of the fashion part segment. Exactly. So it's just very interesting how it's shaping it, क्योंकि अभी brands like Gucci, Louis Vuitton,
Boss, all these companies, they're moving towards digital fashion. They're That's hiring right. gamers for that. Yeah. They're hiring people like me to shape their company. Because when, like 4 or 5 years ago, when crypto took a lot of praise, फिर उसके कुछ ही सालों बाद NFTs आ गए. So NFTs, and then उसके बाद अब digital fashion is like the big thing. So people, like when big companies start doing that, वो जब adopt करती हैं, तो then it gives you a lot of like, आपको एक होता है कि आपने अच्छा, you were on the right step, you were doing the right thing, because now big companies are doing it. Yes, and ultimately the smaller companies also adopt, and you know, this is the need of the time, because we have changed totally to the digital world since COVID, and it's not, now you are proving this, it's not only the education, it's not only the jobs, it's not only you know, branding and clothing, it's about everything that is shifting to digital. Even no one can imagine, I guess few years back, कि हम जो fashion world है उसको digital इस तरह से लेकर आएंगे, और fashion weeks भी हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं. So this is something which I'm very happy about, that it's been changing, and you know, you've just started off like on the right time, क्योंकि अब से कि 10 साल के बाद बात करेंगे ना, शायद अभी बहुत अनकॉमन होगी. अब 10 साल के बाद अगर आपने ये इंटरव्यू देख रही होंगी, आपको उस वक्त अंदाज़ा होगा, या आप किसी भी उस टाइम पे कॉन्वर्सेशन कर रही होंगी, और जब आपने बहुत बड़ी टेड टॉक दे रही होंगी, तो आप तब बताएंगे इंशाल्लाह, आप तब बता रही होंगी कि मैंने उस वक्त में ये काम शुरू किया जब था ही नहीं, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बिकॉज इतना ये वक्त आइंदा जो आने वाला वक्त है उसमें इतना ज़्यादा आने वाला है. जिस तरह से हम AI की बात करते हैं, जैसे हम चैट GPT की बात करते हैं, नाउ द वर्ल्ड हैज़ शिफ्टेड टू दैट. अभी शायद हम उसको, उसकी वैल्यू को उस तरह समझ नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ी अरसे के बाद अब उससे रिलेवेंट भी बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं. Exactly. Which is also great. So I do want to know कि जो लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, और they have studied the fashion, or they have studied something relevant to the digital, and they want to be a part of it, how you are going to guide them as a pioneer? Keep saying that, but yeah, it makes me happy. It makes me happy also. I'm very happy. I'm glad for that. लेकिन अच्छा होता ये, मैं सबको यही कहती हूँ कि I'm a very big example of a self-taught artist. Nothing was handed to me on plate. जब मैं आई थी तब तो कोई tutorials भी नहीं होते थे. We had to like खुद ही figure out करना होता था क्या चीज़ कैसे होगी. And I didn't even believe कि I was a tech kind of a person जिसको चीज़ें समझ भी आएंगी. I was very good at Adobe Suite. I was very good at Photoshop and all that. लेकिन I did not know there was this side of me too. So that was a revelation. You've explored it, ना? Yeah, that was a happy accident revelation for me. Yeah, happy accident revelation. लेकिन मैं यही कहती हूँ कि it does not matter what field you belong to. It does not matter what your age is. When you're starting, you need to do it. You know, that's right. Starting is very important. Does not matter कि आप किस space पे जा रहे हो, कितने. It's not. But just dig into it ना, rather than कि हाँ ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हाँ मैं कर पाऊँगा. ज़्यादा failure ही face करेंगे ना, तो failure is also going to teach you. That is great. अब तो softwares इतने ज़्यादा, अब तो like so many easier softwares are coming up. I was talking to one of my friends who's an entrepreneur. He's London based. He's coming up with a very easy platform for people to use. मतलब anybody can use it from any industry. और मैं ये बात कही थी कि it's so easy for textile designers now कि उन्होंने अगर if they need to production में आगे उन्होंने अपने कपड़े भेजने हैं, they need approval for that. They can easily use our software. They can slap on their designs on top of the avatar. You can pick अच्छा आपको कौन सी silhouette चाहिए. And that's at the Cultalara. No, that's not what Cultalara is. I'm giving an example of another software. Yeah. Another software, any other software that anybody can use. Yeah. For Cult, what we do is we provide digital clothing accessories. Right. So and anybody can get it for Web3. Yeah. Yeah, right. Zoha, thank you so much for coming. It's honestly lovely having you here and lovely having a conversation of this type as well. और मुझे तो बड़ा मज़ा आया enjoy करके. अच्छा, you are here with your father. Yes. Right? क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे मौजूद हैं, तो obviously parents को appreciate करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि basically parents ही हमारी support होती है. मैंने जब देखा ना आप आ रही हैं अंदर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि your father is along with you. क्योंकि basically parents में भी अब्बा जो हमारे होते हैं ना, वो बल्कि ज़्यादा एक सपोर्ट सिस्टम आपका बनते हैं, और आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब बनते हैं जब आपके फादर्स जो हैं आपके साथ खड़े होते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं. चीज़ आपको कॉन्फिडेंस भी देती है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका भी देती है. तो आपके फादर को भी इट्स एन अप्रिसिएशन. ऑल्सो टू ऑल द फादर्स जो कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करते हैं, कीप सपोर्टिंग, इसी तरह से उनको सपोर्ट करते रहें ताकि अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें. और जोहा जिस तरह से अपना एक नाम बना रही है, और अपना नाम बनाने के साथ साथ डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल फैशन वर्ल्ड में ग्लोबली पाकिस्तान का भी नाम बना रही है. तो इस तरह से आपकी जो बेटियां हैं वो इस तरह से बेहतरीन सा काम करती रहें.
यहाँ पे वक्त हुआ है हमें आपसे इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग दिस पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग सलाम पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।